Assalamu alaikum. Today is 12th lesson about MS Excel, and in this lesson we will learn how to get the obtained mark and the percentage while working in MS Excel sheet. कि MS Excel sheet में आप काम कर रहे हैं, कैसे आपने obtained mark निकालनी है और कैसे percentage निकालनी है. First you will have to simply add the numbers of the all subjects. Simply press equal key, and after that enter the marks of different subjects 57 plus 68 plus 90 plus 70. अब इन सबको आपने एंटर कर देना है. उसके बाद सिंपली यू विल हैव टू प्रेस द एंटर की, तो आपके पास टोटल सब ऑब्टेन मार्क आ जाएंगे. मैंने ऑलरेडी सबके इस तरह ऑब्टेन मार्क निकाले हुए हैं. नेक्स्ट स्टेप इज़ टू हैव द परसेंटेज ऑफ द ऑब्टेन मार्क. के ऑब्टेन मार्क हैं उनकी अपने परसेंटेज निकालनी है, तो वो आप कैसे निकालेंगे. सिंपली प्रेस इक्वल एंड आफ्टर दैट यू नीड टू हैव द ऑब्टेन मार्क. Click on the obtain mark cell, and the next step is to have add the forward slash, and after that you have to do the total marks to divide with the obtained marks. Simply click on the total mark cell, and after that next step is to add the sign of multiplication. Simply press shift plus 8 key to have the sign of multiplication. ठीक है, शिफ्ट प्लस 8 करें तो स्टार का एप्लीकेशन मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा. उसके बाद यू विल हैव टू सिंपली ऐड 100 100 to multiply, and after adding 100 simply press enter key. You will have the percentage of the obtained marks. देखिए पहले हो गया. अब इन सब के नीचे वाले जो कैंडिडेट्स उनको भी निकालना है, तो सिंपली क्या करना है, सेल के राइट कार्नर में नीचे की तरफ में आपने इसको राइट बटन लेफ़्ट बटन से ड्रैग डाउनवर्ड की तरफ ड्रैग करते जाना है लास्ट कैंडिडेट तक, जो कि 11 नंबर है. तो इस ड्रैगिंग डाउन करने के बाद सिंपली यू हैव टू लीव इट. तो आपके पास क्या है, सबकी परसेंटेज निकल आएगी. तो ऑल द कैंडिडेट्स जो है ना, परसेंटेज जो है ना आपके सामने स्क्रीन के ऊपर अपीयर हो जाएगी. क्योंकि सिर्फ सिंपली अपने फर्स्ट को सिलेक्ट कर देना है, उसके बाद नेक्स्ट ड्रैग डाउन करना है, तो सबकी जो है परसेंटेज आपके सामने आ जाएगी. तो सिंपल वे टू हैव द obtained मार्क एंड द परसेंटेज. थैंक्स फॉर वॉचिंग.